मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks log modest losses. Sensex closes at 58,645. Nifty settles at 17,516. Rupee appreciates by 16 paise against the US dollar, and Brent crude prices hit a 7-year high to trade above $92 per barrel mark. मामूली घाटे के साथ बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 58,645 पर हुआ बंद। निफ्टी 17,516 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 16 पैसे मजबूत। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 7 वर्षों के उच्चतम स्तर $92 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला, लेकिन उसके बाद भी बाजार में मुनाफा वसूली तेज रही और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों मामूली घाटे में रहे। सेंसेक्स 58,700 के नीचे और निफ्टी 17,500 के नजदीक बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 143 अंक यानी 0.24% घटकर 58,645 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44 अंक यानी 0.25% घटकर 17,516 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कमजोर रहा। यहां बिकवाली अधिक देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.68% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.45% की गिरावट हुई। Sensex and Nifty today logged modest losses. Both stock indices slipped, even as the cues from the global equity markets were positive. The Sensex closed below 58,700 points, while Nifty settled near 17,500 level. BSE Sensex fell 143 points, 0.24%, to end at 58,645. And the NSE Nifty ended 44 points, 0.25% down at 17,516. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices underperformed the Sensex. Mid-cap index declined by 0.68% and the small-cap index ended 0.45% down. In the Sensex pack, shares of 11 companies climbed while 19 fell. Sun Pharma was the top gainer as it surged by 1.2%, followed by Asian Paints, which added 1.1%. Tata Steel rose 0.9%. On the other hand, State Bank of India lost 1.8%, and Mahindra and NTPC both declined 1.7%. Kotak Mahindra Bank slipped 1.3%. Sectorally, 5 indices gained and 14 indices declined. Metal climbed 1.3%, and basic materials sector added 0.5%. Realty sector plunged 2.8% and auto tumbled 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,591 companies gained, while 1,748 companies fell. Shares of 93 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ। इसका विनिमय मूल्य 74 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.16% घटकर 95.23 पर अंतर्दिवसीय कारोबार में आ गया। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बजट से 1-2 दिन पहले और बजट के दिन हमने तेजी देखी, उसके बाद कल भी हल्की गिरावट हुई, आज भी मामूली गिरावट हम देख रहे हैं। बाजार का रुख कैसा दिख रहा और आज का जो कारोबार रहा उसे किन अर्थों में ले रहे हैं आप? तो मनोज जी, जैसा आपने कहा कि इस सप्ताह के शुरुआती 3 दिन में हमने बाजार में अच्छी बढ़त देखी थी, उसके बाद 2 दिन थोड़ी गिरावट रही, और लेकिन ओवरऑल बेसिस पे इस पूरे सप्ताह करीब 2.5% इंडेक्स में हमने तेजी देखी, जो एक अच्छी बढ़त है। पिछले 2 सप्ताह से हम बाजार में गिरावट देख रहे थे, तो कुछ हद तक वो आज पुल बैक रहा इस पूरे सप्ताह में। और खास बात ये रही कि पूरे अगर हम वीक को देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ने वाले शेयर्स थे वो मेटल सेक्टर के शेयर्स थे, क्योंकि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी पुश दिया गया, तो ऐसा लगता है कि वहाँ कंजम्पशन मेटल सेक्टर की अच्छी रहेगी। और मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स, ये जो क्षेत्र के शेयर्स थे इस सप्ताह वो बढ़त में रहे और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल यदि हम ग्लोबल सेंटिमेंट को देखें तो वहां पर काफी प्रेशर आ रहा है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके चलते करीब करीब सभी जो बड़े इकोनॉमीज हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ने का अब वो तय है। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। इनफैक्ट यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी कहा है कि वो आने वाले 1-2 महीनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अमेरिका में डेफिनेटली मार्च में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संकेत दिया है यूएस फेडरल चेयरमैन ने। तो ये बात क्लियर है कि मार्केट्स में आने वाले टाइम में हम इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, ये दोनों काफी बड़े चैलेंजेस रहेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि मार्केट्स में हम अभी अंडरलाइंग एक तरह की तेजी देख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये चैलेंज रहेगा और इसमें प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, इसलिए वॉलेटिलिटी बाजार में रहने का काफी अंदेशा है। Puneet, what's your take on PSU banking stocks? The sector fell by 1.92% or 2% if you want to describe it as such. It fell by 58 points. What is the outlook for PSU banking? Tomorrow you have the State Bank of India and Bank of Baroda declaring their quarterly results. But in anticipation of that, SBI fell by almost 2% as well. So what's your take? Is it because of profit booking, as you mentioned, or are the estimates not beating expectations? So overall, so today, of course, PSU banks fell a little bit. But if I look at the whole week, then PSU bank index was up by more than 3%. So clearly, PSU banks have been among the better performers in this market. I think the most important factor in the PSU outperformance is that the numbers that have been announced by other banks so far, particularly Canara Bank, they have been very impressive, and they have shown that that PSU banks are out of the problems that they had, balance sheet problems they had for the last few years. So I think going forward, market is expecting PSU banks to really record a lot of growth in the loan book, in the profitability, and the problem or the overhang of NPAs, which was there for many years. I think that is behind us, and market is repricing it therefore. So if you look at PSU banks, many of them have almost doubled in the last 6 months, and yet I think the valuations leave a lot to be desired. So yes, I think they are very cheap in terms of the fundamentals, and that is why PSU banks have been doing well. In short term, you could see profit booking like today, but I think in the long term, they are very, very strong. Let's link that to the RBI monetary policy review, which is coming up. You mentioned about how the Bank of England has raised the repo rate, or the discount rate as they call it. What do you expect the RBI to do? Liquidity, do you see them decreasing it? Interest rates coming down? What is the likely impact on loan growth and the performance of private banking and PSU banking in the next quarter? So RBI has a problem of inflation, as every central bank has. They want to rein in inflation. However, that problem is not so acute in India. So RBI has some headroom to continue with accommodative policy.
However, I think going forward, Reserve Bank of India would tighten liquidity further. They want to keep a check on inflation. They don't want to let it run away because a lot of inflation is imported inflation because of high oil prices, high metal prices. So clearly, RBI is not prepared to, I think, compromise growth for bringing down inflation, but they will definitely want to have a balancing act between reducing liquidity and keeping growth intact. In fact, the budget this year is, again, I had said earlier, is a very bold budget. They are not afraid of borrowing more. In fact, they have said that they will probably borrow more and spend more to keep the engines of growth going. And I think RBI will be in sync with the government. So they will not compromise on growth, but they will want to control liquidity to some extent to keep inflation in check. So, commodity prices going up. We'll discuss that shortly after a short break. So please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our expert, Shri Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. I was in the process of asking you about the metal index, which in fact went up by 1.18% in today's trade. Tata Steel rose by almost 1%, and basic materials like Asian Paints also going up by 1.1%. We have seen the recent trend that both basic materials and metal tend to move in the same direction, which is upwards. To what extent do you expect the valuations to keep going up despite the commodity cycle in favor of producers? So, Arjun, commodity prices are in a inflationary cycle that we all know, and I don't think that inflationary cycle is coming to an end in a hurry. So clearly the primary producers of these commodities, if you look at steel, you look at copper, aluminium, so all these players will be benefited. However, industries which consume these primary products, like FMCG companies which produce goods from these primary products, or construction companies, they will face pressures on the margins, which we have already seen. We have seen the margins contract for FMCG companies, and also for consumers, the spending power goes down because there is an inflation in goods. So clearly, some companies are going to benefit from this cycle, inflationary cycle, and some companies are going to suffer. Now, metal companies and basic material companies, as you mentioned, are going to benefit from it. And I think this cycle is going to go at least for another 6 months to 1 year before it starts hurting consumption. So, to that extent, yes, metal companies, metal sector, I think will be beneficiary. Other hand, I think FMCG manufacturing companies are going to face pressures on the margins in at least 6 months to 9 months. पुनीत जी, हम आपका ध्यान रियल्टी सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे। दिवाली के आसपास और उसके बाद के कुछ कह लें कि सत्रों में हमने रियल्टी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देख रहे थे। आज इसमें गिरावट हुई है लगभग 3% की। आने वाले दिन रियल्टी सेक्टर के लिए कैसे दिख रहा है आपको? तो मनोज जी, जो हमें डेटा हमारे सामने आ रहा है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड है घरों के लिए या रियल्टी सेक्टर के लिए वो बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी चीज है। जो पेंडेमिक के बाद जो कंजम्पशन है, यानी नए बायर्स हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं, और जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो अपना माल आराम से बेच पा रही है। तो उन्हें इन्वेंट्री भी उन्होंने बेच पा रहे हैं, और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है। एक पूरा जो इकोनॉमी को भी एक गति मिलती है रियल्टी सेक्टर से, क्योंकि रियल्टी सेक्टर देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो रियल्टी सेक्टर से प्रभावित होती है। तो डेफिनेटली अभी जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि रियल्टी सेक्टर में पिकअप है, डिमांड है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगी और उसी प्रकार से घरों के दाम बढ़ेंगे, तो क्या वो कंजम्पशन को हिट करेंगे अभी हमें नहीं मालूम। पर मुझे लगता है कि ये चैलेंज रहेगा आने वाले समय में। लेकिन
मे बी फॉर द नेक्स्ट 1 year, जैसे मैंने पहले कहा, अभी तो मुझे ये एक पॉजिटिव साइकिल में है रियल्टी सेक्टर, उसके बाद देखना पड़ेगा. Puneet, if you look at the realty sector and listed companies, there are only a chosen few companies which have not undergone any kind of serious investigation and fraud allegations. What does the investor actually think when they are looking to buy into realty stocks, whether it is your individual or the institutional investor? Despite the commodity prices going up, they are the key inputs into the building and construction business. What is the sentiment of the investor for this particular sector? So, Arjun, you're right. I mean, until a few years back, the real estate sector was highly unorganized. Anybody could become a builder. They could start building projects. They would take money from consumers and will not deliver homes. So this was a mess a few years back. Then the present government was able to bring in legislation like RERA, which kind of organized and regulated this sector. And now what we have seen is that a lot of small players and people who are not scrupulous, they have been weeded out. They have been taken out. A lot of them have, of course, gone to jail. We all know they have defaulted on delivery of homes. So they are going through the legal process and they're suffering. But handful of companies, few companies with very good corporate governance, they have survived. And in fact, for them, the opportunities have grown because the unscrupulous elements have been taken out and the market is now open for the organized, regulated players. So when investors are now investing in real estate sector, then they are looking at corporate governance as a major benchmark. In fact, I would like to point out that post all these reforms in real estate sector, the foreign direct investment in real estate has really shot up. We have seen very large investors like many other players. They have come in and they have invested in housing projects. They are invested in REITs, residential REITs, which is real estate investment trusts. So a lot of money has come into real estate sector post these reforms, and I'm quite hopeful that going forward the real estate sector will be cleaned up thoroughly and will then comprise of companies which can be trusted. What about the currency market? How do you see the rupee valued against the US dollar, especially with the Fed action on tapering and raising interest rates? So, rupee has been moving in a narrow range of 74 to 76 to the dollar. Although there were a lot of pressures on the currency because we knew that the dollar index was going higher, and whenever dollar index goes higher, we find a lot of pressure on the rupee to depreciate. Fortunately, it did not happen in case of India. In many other countries, the currencies have depreciated because the fundamentals were not so good. For India, the economic fundamentals are very strong. First of all, we have very large foreign exchange reserves. On top of it, our exports have been growing, so which brings in a lot of currency, hard currency. Only pressure on our exports really, on our currency is really oil imports, because oil prices have been going up, putting a lot of pressure on our currencies. So clearly, these are forces which are counterbalancing. But my own take is that rupee is in a very strong position, and we will not see a very significant decline in rupee in the next few years. Probably it will remain in a tight range for next in 74 to 76 range for maybe next 2-3 years. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओह, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज तेजी का रुख दिखा। अमेरिका में Amazon.com के बेहतर आमदनी संबंधी आंकड़ों का एशियाई बाजारों में निवेशकों पर अनुकूल असर आज देखा गया। हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 3.2% के शानदार उछाल के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.6% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। सार्वजनिक अवकाश के कारण चीन का शेयर बाजार आज भी बंद रहा।
यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक कुल मिलाकर कमजोरी का रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस के कैक 40 में 0.7% की गिरावट थी। जर्मनी का डेक्स 1.3% नीचे कारोबार कर रहा था। हालांकि लंदन का FTSE 100 0.1% की मामूली बढ़त के साथ चल रहा था। Moving on to the U.S. stock market, Wall Street snapped a 4-session winning streak yesterday. All three benchmark equity indices ended lower, led by a historic fall of Facebook stock. The wipeout in Facebook's owner Meta Platforms erased over $230 billion in market value, the biggest one-day loss in the history for a U.S. company. The Dow Jones Industrial Average fell 1.5%, S&P 500 plunged 2.4%, and the Nasdaq Composite Index tumbled 3.7%. Puneet, even in Money Matters, which is the program we had in the afternoon between 3 to 3:10 p.m., we had discussed about the Facebook shares fall and its impact really on the U.S. stock indices. What are the investors, especially the institutional investors, thinking right now with the U.S. government's policy, especially its president, towards infrastructure spend? Do you see companies which are linked to that would be the subject of buying interest, and companies like Facebook have run their course in terms of valuation? The two things are very intricate, very closely linked. A lot of institutional and big investors have been pouring money into technology counters or technology stocks because they felt that there was a lot of growth in those companies, and a lot of premium was being paid for that growth. However, when Facebook came out with numbers yesterday, they said that, look, we expect the growth to stall, and they're facing a lot of competition from other video platforms. So the moment these companies show a decline or a pause in the growth parameters, we find that investors, they panic, and which is what happened in Facebook yesterday. The stock went down by 26% in one day, losing almost $230 billion, as you mentioned. And where will this money then go from? If institutions withdraw money from these growth stocks, so-called growth stocks, then I think it is most likely that they will divert this money to value-based stocks. So we will see rotation of money from growth stocks to value-based stocks. And value-based stocks are basically old economy companies which are linked to construction, materials, basic materials, manufacturing. And I think this current year, the year 2022, will be the year of money being rotated, being taken out from growth stocks and being invested in old economy stocks or value stocks, so we say. So I think that is what is happening in USA, and inevitably it will happen in all major markets in the world. पुनीत, एक बहुत अच्छी चर्चा की शुरुआत आपने की है। ओल्ड इकोनॉमी और नई इकोनॉमी के जो घटक हो सकते हैं, तकनीकी सूचना क्रांति पर आधारित कंपनियों का बहुत बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और उनका एक ही दिन में $230 अरब से अधिक का नुकसान। यहां पर चिंता के बादल वहां उठ रहे जहां कह लें कि तकनीक आधारित जो ये कंपनियां हैं, यदि रातों रात 200 यानी कह लें कि एक रात में इतनी बड़ी राशि गंवा सकती हैं, तो जैसे तकनीक आधारित कह लें कि कुछ कंपनियां थी जो नई तकनीक के आने से फोटोग्राफी सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां की पूरी कह लें कि दिवालियां हो गई। आने वाले दिनों में भी क्या ऐसे आसार हैं कि तकनीक बदलने से या कह लें कि आमदनी उतनी नहीं रह जाने से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी धराशायी हो जा सकती हैं रातों रात? बिल्कुल, आपने जैसा जिक्र किया, कोडक कंपनी जो बहुत बड़ी एक फोटोग्राफी की कंपनी थी, वो ओवरनाइट ऑलमोस्ट विद इन 1 और 2 ईयर्स वो कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी डिजिटल फोटोग्राफी आई और वहां पर कोडक कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो गया। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि कंपनीज की जो लेटेंसी है, जो जितनी जल्दी वो खत्म होते हैं कंपनीज, वो बहुत एक रिस्क रहता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को बहुत सजग रहना पड़ता है जब वो इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी में, उनको समझ उसको करनी पड़ती है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म कंपनीज जैसे हम कहते हैं, वो उन कंपनी में बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टर्स ने किया, ये सोचकर कि ये कंपनीज ग्रो करती रहेंगी, और कहीं कुछ हद तक मैं कहूंगा इसमें बबल, वैल्यूएशन बबल बन गया, और उसका खामियाजा इन्वेस्टर्स भुगत रहे हैं कि वो बबल जो है, ये कंपनी खराब नहीं है, दे हैव अ बिजनेस मॉडल, लेकिन मुझे लगता है कि इनका वैल्यूएशन जो था
वो बबल जोन में था। तो कुछ हद तक वो एक रियलिटी या एक जो सच्चाई है उसकी तरफ शायद अब वो आ रहे हैं कि ये कंपनी को क्या करेक्ट वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, और ये मैंने जैसे कहा ये हर जगह ही ऐसा होने की हमको उम्मीद है। So Puneet, technically speaking, your Dow Jones Industrial Average represents your old economy company stocks, and the Nasdaq Composite Index represents the new economy company stock, and we're seeing the difference here. Dow Jones fell by 1.5%, Nasdaq fell by 3.7%. So do you see index arbitrage here, and investors, all they have to do is follow the index, single index model to invest? So that is one way of looking at these markets, because if you look at Nasdaq, it has already fallen, I think, around 20% from the top. So it is already near the correction zone. But Dow Jones has not fallen that much, and probably, as I said earlier, probably throughout this year we will see this rotation happening. Of course, it won't be a smooth process. So you will see some bounce backs on a particular day. Nasdaq will go up. Dow Jones will go down. It will keep happening. But I think the general trend is going to be that some money will be taken off the table from high-valued technology stocks, and it will be reinvested in value-based old economy stocks, which may not be growing at that faster pace, but they are profitable companies and they offer good value to investors. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today reached 7-year highs as geopolitical tensions and a winter storm in the United States fuel concerns over supply disruptions. The crude prices jumped around 2%. In intra-day trade, Brent crude was trading around $92.80 per barrel, while WTI crude prices were at $92 per barrel. What's the oil price rise you expect? Shale oil does not appear to be competitive to what the Middle East is producing. OPEC countries are able to drive prices up. They have not increased supply. How do you see OPEC and OPEC Plus and non-OPEC countries reacting? So, Arjun, clearly OPEC Plus countries or oil producers are taking advantage of disruption in supply chains right now, because oil is not able to flow freely between countries across oceans, and therefore there are shortages in certain pockets. And on top of it, you have a geopolitical situation happening in Europe, where there's already fear of disruption of gas supplies, and therefore countries are hoarding oil, they're hoarding energy, and that is sending prices higher. But it is, to some extent, I think it is self-defeating, because eventually if prices go much higher, then consumption drops. So clearly, short-term, yes, oil prices are very volatile, they're likely to go higher, driven by geopolitical considerations. But I think long-term, these levels cannot be sustained, and eventually we will see prices come down. But again, I would say later towards this year only, that maybe for this entire year we will see higher oil prices. आइए चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में 130 रुपए बढ़ा 48,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 180 रुपए बढ़कर 60,910 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़ा $1,811.30 प्रति औंस पर पहुंचा। चांदी भी मजबूती के साथ $22.50 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log modest losses. Sensex closes at 58,645. Nifty settles at 17,516. Rupee appreciates by 16 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices hit a 7-year high to trade above $92 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हारेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market